Good evening. It's ninth year of GQ. Any words from you? Well, it's always a wonderful show. I'm always associated with it in some way or the other. Last year I was doing the red carpet. Um, it's a beautiful, classy, very entertaining evening, and very interesting and deserving award winners win every year. I'm looking forward to a fabulous show as always. Any stylist, please? Any style advice you have? Oh, I don't think I'm capable of giving any style advice. I don't give any style advice. Anything you have received? Oh, let me think. Let me think. The only style advice I follow is I don't mix metals. So if I'm wearing gold, I keep it all gold. If I'm wearing silver or diamonds, I keep it. That's the only advice. I don't know even who gave it to me, but that's the only thing I keep at the back of my mind. Who should be the GQ man of the year? According to man of the year, Are there nominees? not really. Whoever according to you. Who should be GQ Man of the Year? Last year it was Ranveer Singh, wasn't it? Let me think. I don't have an answer, sorry. I'm sorry, I don't. Okay, what are the qualities a man should have? Well, he should be classy, he should be sophisticated, he should stand for more than just what he does in his day job. He should stand for more. One thing more, Miss Amitabh Bachchan completes 75 years on 11th of October. And yes, remembrance to the association you would like to share and wish him all the best. Well, I just think, at the age of 75, he's doing such wonderful work. There are directors who write scripts especially for him, author-backed roles for him. He's doing amazing work even at his age. I wish him all Hi, how are you? Going to be some bites? Good evening to you. आजा भाई पूछ ले. How are you? See you. Okay. हाँ? यार आज तो मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज ये इवेंट्स बहुत बढ़िया रहते हैं. एवरीवन कम्स हैज अ ग्रेट टाइम. GQ has always been a great host, so I hope I don't mess it up and I do a good job hosting. It's the ninth year of GQ. How you take it? Ninth year of GQ, would you like to host it? Yeah, I mean, happy 9th year GQ. It's great. I mean, it's a great global brand, and I'm happy to be associated with it, and especially on their 9th year. What a better year to be hosting than the 9th year. कैसा है भाई? यार मैं इमरान खान को मानता हूँ सबसे स्टाइलिश एक्टर. प्रतीक बब्बर हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी स्टाइलिंग, उनकी खुद की ओरिजिनलिटी है. किससे मिलने और क्या क्या तैयारी? मैन ऑफ द ईयर अवार्ड. आई डोंट थिंक देयर इज अ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड. आई थिंक देयर आर सेवरल मैन ऑफ द ईयर. बट किसको मिलना चाहिए? नो मैन, देयर सो मेनी गुड पीपल. हमारी इंडस्ट्री और तरक्की कर रही है और एक्टर्स बढ़ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि एक आदमी को जीतना चाहिए. दैट्स व्हाई इट्स मैन ऑफ द ईयर एंड नॉट मैन ऑफ द ईयर. और ये क्या बोला आपने? यार मैंने रिहर्स बहुत किया है. ईरा दुबे इज़ माई को होस्ट. हम ऊपर बैठ करके अभी रिहर्स ही कर रहे थे. तो उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और लोगों को मज़ा आएगा. इट्स वेरी वेल रिटन बाय अनीश त्रिवेदी. सो आई एम होपिंग दैट वी डू अ गुड जॉब विद इट. हाँ यार, एक नई मूवी मैं कर रहा हूँ संजय मिश्रा, रसिका दुग्गल के साथ. तो हम लोग मनोर में शूट कर रहे हैं. इनफैक्ट मैं वहीं से आया सुबह. तो ये मूछें हैं, दाढ़ी है, बाल वैसे हैं.
चश्मे आज लगा दिया GQ बनने के लिए. Any advice you have received for your style? You know, Tanya Vora of GQ advises me a lot. She's a great stylist. So I'm not, I mean, मैं jeans और t-shirt और boots पहन के आ जाता हूँ हर जगह. But she's been advising me. This suit is a Hugo Boss suit, thanks to Tanya Vora. So that's who advises me on style. Thank you. See you. Bye. Hello, Amrita. Just called you. Yes, I know. Right here. Purna, come. Hi. This is Purna. I think इस बार हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस बार हमारे फिल्म पूर्णा के लिए which based on the great Purna Malawat. We're getting awarded for that, I think. So really happy to be here. Purna से पूछे. समारोह में आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके पहले मैंने मूवी के बारे में मुंबई आई थी। सार के साथ मैंने पूरा मुंबई घूमा था, तो इट्स ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर मी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का इवेंट। थैंक यू। अब ये मैं बताऊं कि नहीं बताऊं इसके बारे में मैं बिल्कुल ये बहुत अजीब मसला है। अगर अवार्ड मिले तो बहुत खुश होंगे, अगर नहीं मिला तो भी खुश होंगे। Style advice. I think when it comes to being in style, it's always nice if you wear some clothes. Clothes are good. Without clothes, it's difficult to be stylish. Last question. Yes. माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एज अ गर्ल सम पीपल्स थिंक लाइक girls cannot do, but I proud to say that girls do everything, so I was proud when I was on top of the Everest. आपका जर्नी कैसा था while you were filming and shooting? Film is a new future for me and it's like new birth for me. So I wanted to say thanks to Rahul Bose sir for made movie on me. Thank you for climbing Everest. Thank you. राहुल आप जाएं उससे पहले निवेदन था अमिताभ बच्चन 75 साल आपने पहले 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, उससे कुछ आपकी यादें उनके साथ में बधाई देना चाहेंगे? Well, we've never worked together, so professional यादें तो है नहीं, लेकिन personal यादें हैं. He supported Purna. He met with Purna. He supported the film.
सबसे प्रोफेशनल, सबसे compassionate, सबसे supportive member of the film industry, I think, is Mr. Bachchan. Sir, we wish you all the best, and you make us proud. Thank you. Thanks. Urvashi, give me my phone. I'll take a selfie here with Purna if I Insta and all this shit. All questions, they don't matter. Always. Twice a year. Yeah, I'd just love to congratulate them. They are one of my favorite people, and I make sure that I attend every year. So very happy to be here. My God, that's a difficult question. But I know it's a London designer. I'm really sorry. Can you tell us something about the dress? Just something I liked. They showed me a few options. I picked this because I really liked it, and this is my mood today, I think. स्टाइल एडवाइस आपको मिली उसके बारे में बताना चाहिए. I dress according to how I feel on a particular day. So that's it. I don't follow any trends. I don't even know what the trends are right now. राधिका जी इसी मिलना चाहिए GQ आपके अनुसार I think, I don't know, man. Really, I don't know. I'm sure whoever they're giving the award to really deserves it. I've done Badman, which will release next year. Then there's Bazaar we're shooting. I'm doing Shoot the Piano Player. This is a tentative title of Sriram's film. And I'm also shooting for Netflix. So these are the few projects that I'm doing right now. Mr. Bachchan, 75 years on 11th of October. Any wishes or any interactions that you should? No, just a very happy birthday to him, and it's only him. Thank you.
actually, this is my first year to GQ. I've never attended a GQ event, and this is my first year, so I'm super excited. And I love style. I love dressing well, and that's something that I've always maintained all throughout all functions whichever I attend. So I'm really, really excited. क्या हुआ? अगर आप अवार्ड दे रहे हो तो मैं ले लूँगा. Most stylish singer. I think Badshah is really stylish, but his is more of the jackets and the more hip hop look. Other than that, I'm not sure. Honey Singh, I guess. Yeah. Style advice. Yeah, I've always got this from Salman Bhai. He always told your trousers and your shirt should be of a good fit. If your fit is not right, everything goes wrong. मुझे नहीं पता, मैं तो attend करने आया हूँ, and this is my first year, so I'm going to be enjoying a lot. No. Okay. Actually, उनके साथ बहुत ही एक special song हुआ था. मेरे buddy from the movie Bhootnath was my first song in Bollywood as a child singer, and that happened at the age of 11. और उनके birthday पे ही हुआ था. So I have very fond memories of that, and I want to wish him more and more success and good health. क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने entertain किया है. I wish that he keeps entertaining us. Thank you so much. Thanks a lot. Hi, how are you? कैसे हैं आप सुमित जी? Hello. Hi. Good evening. Oh, thank you. Yes. Well, we're very happy. It's the official entry at the Oscars this year from our country, and we're really proud of Newton. नहीं एक्सपेक्ट तो हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो एक बहुत अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट की थी कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, ईमानदार फिल्म बनाएंगे. And now people are recognizing our effort and recognizing our honesty. It feels great. I'm very thrilled, and Newton is a film that should be, I think it should get into the top 5 films, because I don't know if you have watched it. It's so relevant, and it just shows a different part of India. But you know, the kind of film releases that he has had and the kind of appreciation he's got, the best thing about him is he hasn't changed. And I keep telling him, how do you deal with so much love and appreciation? And I think he's so consumed at his work that he doesn't realize what's going on. I'm very happy being here. You know, this is my 3rd GQ award, and I've got a Men of the Year award earlier, and then 50 Most Influential award. So it's always a pleasure, you know, coming to GQ.
No, because he is a stylish man. So it's all him. Thank you. Oh, my attire. I don't know what I'm wearing, but it's by Devki, my stylist. She's given it to me. Any style of advice you have received? I have received. I think just be comfortable and feel confident in whatever you're wearing. Well, I think it just got announced. It's too soon to decide, but we're gonna meet up. We're gonna plan something. There has to be a strategy, and we'll be going to America to promote it. Of course, I would, I will definitely call him and meet him, and because Lagan was there, and we all are really proud of Lagan, so I'm sure he will help us a lot. Thank you. Sorry? What can I? Oh, what's coming after Newton? So after Newton, there's Omerta with Hansal sir, which was at TIFF. And then there's Bose web series, which I'm really excited about. And there is a film called Shaadi Mein Zaroor Aana by Ratna Sinha. Thanks a lot. Thank you, guys. Hi, how are you? Hello, hello. They're always redefining class and fashion and oomph. And so yeah, it's great to be here with everyone, with lots of friends. All of my friends are coming today. So yeah, it'll be nice. I'm wearing Anjali Bhaskar, and I fell in love with this dress ever since I tried it for the first time, which was I think a few months ago. And I've been sitting on the dress since then and promising her that I'm going to wear it soon. And today I think it was the right sort of night to put it on. And Rosario Belmonte did my makeup, Shrija styles me, so yeah. Advice that I've received? Not really. People happen to actually like what I do with my style, and I think I have a great stylist, Shrija Ragopal. So I think we get it right each time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, please. Hi, good evening. No, very excited, and it's good to see sports person as well, and we are very excited too. I think the biggest tournament that's going to happen in India is going to be Under-17 World Cup that's starting from October 6th. So we're all excited. Hope the Under-17 boys do us proud, and I think they're ready. We just had a team that's been announced yesterday, and I'm sure they'll do well. Thank you.
आप हो. मैं देख रहा था कि आप कहाँ हो. How are you? I can't hear you. 9th year of Well, for me, it's a special year. It's the first time I've come to GQ Awards, and I'm really looking forward to it because I'm getting an award tonight. So I'm here. I have tremendous respect for GQ India. They do a great job. I think Shay, Vijendra, they've all been a fantastic team. Unfortunately, whenever these awards have happened, I've never been in town. So it's I'm here tonight, and I'm getting an award. So it's good. Well, मुझे तो ज़्यादा advice मिली नहीं, but मैंने काफ़ी दी है. And I just think that most important is that we should be ourselves. Like today when I was getting dressed, and there was a bow tie with this, and there was a trouser. So when I was so uncomfortable, and I said, this is not me. So till I didn't wear my jeans, and I folded them, and I thought this is me now. So I think it's very important to be yourself. For me, I've grown up on Hindi films, especially the 70s, and Mr. Bachchan has been phenomenal. I think he's phenomenal. The way he dresses, the way he acts, the person he is. I think right now we're GQ Man of the Year awards, and there can be no one more stylish than Mr. Amitabh Bachchan. I think he's brilliant. And I think from all of us, we wish Amit ji a very, very happy birthday. That's unwanted noise. Hello, how are you? Good evening. Oh, well, it's my third time here, so it just gets better, it gets hotter and chicer. And I would say rather GQ is dapper. Dapper is the word. It's very GQ according to me. It's by Fame and Partners and Dior. It's very chic but effortlessly sexy. So yeah, been styled by GQ. So very apt for this event. Always, I think, wear everything with confidence, because if you're confident about what you're wearing, it's going to show on your face and you're automatically going to look sexier. Thank you. Mera style. Yeah. I think I'm more of a classic person. There's a saying that in a world full of trends, I'd like to be a classic. So I think I always fall in that. Comfortable रहना चाहिए, casual रहना चाहिए, और like I said, अगर smile और confidence के साथ कुछ भी पहने तो you look better. Yeah. Sorry? Most stylish, Hrithik Roshan. I think Hrithik Roshan is very, very stylish. He looks good in whatever he wears. So, yeah. Very soon, as soon as I will sign and I can announce, I will definitely tell you. Thank you. Thank you.
Good evening, good evening. How are you? Thank you so much. Thank you so much. Ninth year. Ninth. Ninth year. My first time. Just so. yeah, like as young as him. Happy ninth year, GQ. Very glad that you're becoming a mature toddler, and looking forward to seeing you grow into a teenager and 4 more years. into many centuries ahead. I think it'll be a great party and a great award function. So I'm hoping that we'll have a nice time tonight. Nothing else. I'm wearing Amit Agarwal, and yeah, it's like a one-piece sari that's made into a dress. I like it. It's looking lovely. Thanks. Yeah. जी वो नहीं आई अभी वो पहुंच रही है हाँ मैं बहुत पावरफुल थी दोनों और काफ़ी डरा हुआ था मैं आई वॉज वेरी स्कैर्ड व्हेन आई स्टार्टेड you know when I got to know that I was working with them. I'm scary. No, I didn't know you that time. I met them straight. I met you guys straight at the airport. So I didn't know them, so I was scared. But they were lovely, like to work with. So it was a great, and I learned a lot. I learned a lot of Hindi from him actually. Yeah. Arslan's Hindi is amazing. Yeah. Really? Yeah. His diction is very good. Thank you. I don't know. I think style is a very personal choice, and I think that for me it's very moody. I think that you have to wear your personality on your sleeve, and as an actor, I have a very mercurial personality. Thank you. Thanks. What about the weather? The weather? Weather. Yeah. Oh, yeah. They should make clothes appropriate to the weather. Weather of the Like, place that you are we at. are always given clothes which have no appropriation to the place where we're at. So that's a good Weather. thing. Well, I think GQ is one of the most fashion-forward magazines, and I think they have a great influence on the world of fashion for men, and they make them look really hot and sexy. So continue the great work, and may there be many, many more anniversaries. Happy anniversary. Style advice, I think maybe less is more. Less is more, yeah. Qualities I look for in a man. I think what tops the list for me is integrity, sense of humor, intelligence. That's very important. Let's start with this. Oh, I absolutely love Mr. Bachchan. Happy birthday, Mr. Bachchan, and we all love you. Mwah. Thank you.
Yeah. I mean, turned 10 and we are looking forward to that. You know, it's really cool. GQ Men of the Year awards because I think it's now become all about women. So I think I'm very happy to give one day to men. Why not? You know, I have a really great team of stylists. I mean, these girls I work with, they are my best friends, so don't ask me. I mean, I just know they just give me the best stuff and I know how to carry it with confidence, that's it. Thank you. Hi, good evening. The wish right now is I wish I can take that car back home, but otherwise it's always such fun to be at GQ, and everyone's always looking so good, so it's very exciting to be a part of such good looking people. तो आज थोड़ा कुछ अलग करना था. I'm always out with my curls, so I wanted to do a slick hair back, something different, so I've tried that today. Red is one of my favorite colors, so you know I wanted to try something different today, so it was just another different day. Thank you. Thank you. Yes. Yes. I've been with GQ ever since my modeling days, you know, so there's a long connection with GQ. Yeah, come again. Oh, thanks for keeping the men's fashion alive in the country, and hopefully, you know, we'll see more of you guys all over. Thank you. Thank you.
हेलो नमस्कार नमस्कार थैंक यू यार थैंक यू हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म को लेकर मैं तो सुबह से शूटिंग कर रहा हूँ अभी पैकअप करके आया हूँ एक्शन शूट कर रहे थे इट्स शेपिंग अप रियली वेल बहुत अच्छी बनी है और वेरी एक्साइटेड कि अब मटेरियल आना शुरू होगा दीपिका का लुक आया है शायद का आएगा मेरा आएगा ट्रेलर आएगा तो फीडबैक इज़ वेरी गुड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट हाँ पक्का मेरे भाई पोस्टर पे डेट लग गया अब देयर इज नो लुकिंग बैक गोली बंदूक से निकल चुकी है और 1 दिसंबर को आएगा सलसला वाओ एक सेकंड हाँ आई होप कुछ जीतूँ यार आज रात हसीन रात है और अगर कुछ जीत गया तो मतलब सोने पे सुहागा आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर हाँ जी हाँ वो दाढ़ी निकल गई वो यंग अलाउद्दीन का पोर्शन शूट करना था तो इसीलिए आई मिस माई दाढ़ी पर an ideal GQ man is one who's very comfortable with himself, one who is, for lack of a better phrase, a complete man. You know, one who lives life to the fullest. Let's put it that way. आ गए? अरे सॉरी डरा रहे हो यार तुम कमाल है यार मैं भागने वाला था अंदर मैं बच्चन साहब आ गए उस यार मैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में जो भी बोलूँ कम है वो हमारे देश के सबसे बड़े स्टार मेरे बचपन से लेके आज तक मेरे आइडल मैं ऑलमोस्ट रोज उनके बारे में कुछ सोचता हूँ यू नो ही हैज सच एन इफेक्ट ऑन ऑल आवर लाइफ ही इज ट्रूली व्हाट यू कॉल अ ग्रेट मैन ग्रेट पर्सन मैं पर्सनली दे दूंगा उनको अमिताभ बच्चन साहब को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे Hi, how are you? Sorry, I can't hear you. 9th year of GQ. My words? I wish GQ many congratulations for completing 9 stupendously successful years. परी की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। भूत के अवतार में तू रियली बहुत सही लगती है। आपको हर अवतार ये कौन सा अवतार है? You know, आज जहाँ पे मेरी शूटिंग चल रही थी जहाँ पे मैं शूट कर रही थी वहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क था और मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे लगा कि ये जो दुनिया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और लोग आपको नहीं पहुँच सकते और आपके फ़ोन में ना कॉल्स आ रही है ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ नहीं आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है कि ऐसी जगह भी है इस दुनिया में और मैं थी आज उस दुनिया में और वो एक्चुअली वो दुनिया मुंबई में ही है और मैं बहुत खुश थी मुझे लगा यार ये अच्छी लाइफ है तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कि आज क्या निकला है और आज क्या लॉन्च हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने कुछ देखा नहीं है बट अभी मैं अपनी जानकारी थोड़ी बढ़ाऊंगी आपकी जितनी सुमित और फिर मैं अगली बार जब आपको मिलूंगी तो शायद हम इसके ऊपर थोड़ी वार्तालाप कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए बस इस बात को मैं यहीं तक सीमित रखती हूँ कि आज मैं नो नेटवर्क एरिया पे शूट कर रही थी जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली मैंने ये जो कपड़े पहने बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने पहने कालवा आप चाहते हो मैं आपको स्टाइल एडवाइस दूँ जनरली
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा सिंपल आप अपने अपने कपड़ों को रखें या अपने स्टाइल को रखें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मेरे हिसाब से। जो हर इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो मैन है या वुमेन है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, काइंडनेस, कंपैशन होना चाहिए, और साथ में एक ड्राइव होनी चाहिए किसी की चीज़ के प्रति, चाहे वो अपने काम के प्रति हो या कोई आपका जो किसे बोलते हैं कोई भी सोशल कॉज के प्रति हो, कोई ड्राइव होनी चाहिए। श्रीमान अमिताभ बच्चन का 75वां जन्मदिन है 11 अक्टूबर को। कुछ उनसे मिले हैं, जुड़े हैं, कुछ याद और कुछ जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो तो मैं उनको डायरेक्टली दे दूंगी ना, मैं आपके थ्रू क्यों दूंगी। हमारे कैमरा के लिए आप लव यू ऑल, थैंक यू। Very good evening for all of you guys. No, this is my first time to GQ. Congratulations, GQ, and I want to keep coming here. And yeah, that's all. And please watch Ragni MMS. It's coming soon in probably 15 days. Sorry? I'm wearing Collio and I'm wearing Zara shoes. Yeah. I think style is something very personal. It's something, it's a way of expressing yourself. So just wear what you feel comfortable in. And I love Ranveer Singh. Yeah. Yeah, and Priyanka Chopra. They are like two of my style icons. Yeah. Yeah, that'll be really nice. Thank you guys. Ragni MMS is coming out in 15 days. Yeah. It was really nice working with Ekta Kapoor. I'm so happy she gave me this chance to play Ragni, and I love it. Yeah. I feel web is somewhere where I can express myself more as an actor, and yeah, because it's more expressive. Like I can do more of my things as an actor on web than what I would do on TV. So people are loving it. It's bold and it's nice. Yeah.
Well, I was just trying to be successful. That's all I would say. Thank you so much. Thank you. Big time wishes. Come on, let's all do it. Come on. Hello. It's a 9th year GQ. Namaste. 9th year GQ. Any wishes, Karan? Oh, I'd like to wish GQ all the very best. They're truly fashionable. More power to them. Yes, absolutely. Huh? Sorry? In what capacity? He's here to just be fabulous and to win all the awards and to... Well, for once, I'm not hosting. And not host and just be fabulous. Good evening. Kaise hain aap? It's become a group interview. It has. We're Are we promoting something? I think Karan has to give off some style advice, you know, I mean, because he's अरे the मैं best कौन होता हूँ person. इनको ये बहुत ही stylish हैं. She's exceptionally stylish, very fashionable. And style advice is that less is a lot. Oh my goodness, I love it. Yeah. I love it. Less is a lot. Less is, a lot is less. Less is a lot. That's what I said. Oh. Yes. I can't wait. 29th September. In fact, हमने अभी ये गाना हमने कुछ किया था. ऊंची है इनकी building. लिफ्ट तेरी Yeah. बंद. हमने अभी अपने लिफ्ट में नीचे आते हुए we performed. Yeah, we did. They नहीं, were नहीं, so बिल्कुल sweet. नहीं. They did a उस little. बात के हम पैसे They did a लेते हैं. little jig for me. क्या मतलब है आपका? अब ऐसा क्या दे सकते हैं? नहीं, बस जैकलीन ने बहुत प्रमोट किया इस फिल्म को वरुण और तापसी के साथ, और जाहिर है कि इस फिल्म का दूसरा भाग जो आ रहा है फिर से, and it's a great ode to the original and we can't wait to see it on the 29th. Very excited, guys. आप रेस में भी हैं. देखिए एक के बाद एक बड़ी फिल्में इनके साथ. कंफर्म कीजिए. Perform कीजिए. For race. Perform कीजिए. Perform कीजिए. Perform कीजिए रेस के लिए. कंफर्म कीजिए. Oh, confirm कीजिए. देखिए हम कोई चीज इस मंच पे कंफर्म नहीं कर सकते. Yes, and you know, because we're here हम for... deny we're भी नहीं here- कर we're सकते. here- GQ. We'll come back. We'll come back. क्या हाल है? नमस्ते. Good evening. 9th year of GQ. आप कुछ कहना चाहेंगे? Well, I'd like to wish GQ all the very best and congratulations for completing 9 years. Yeah. और कुछ पूछना है? अमित जी, आप एक different look में हैं, तो हम ऐसा मान लें कि ये ठग्स ये look में आप- नहीं, ये लोग ठग्स की तो नहीं है. क्योंकि ये हाँ, बाली वाली हैं. एक्चुअली बाली फिल्म के अंदर तो और थोड़ी बड़ी है. नाक वाक चढ़ाया मैंने. हाँ, तो ये चीज़ें ठग्स की है, लेकिन लुक ये ठग्स का नहीं है. अमित, कोई स्टाइल एडवाइस आपको किसी ने दी हो वो आप दर्शकों के मुझे रोज़ स्टाइल एडवाइस मिलती है किरण जी से. उनको लगता है मैं ठीक से कपड़े नहीं पहनता हूँ, तो आज मैं टाई वाई पहन के आया हूँ. साथ आपकी फिल्म की बहुत चर्चा है. बच्चन साहब के साथ आपने काम किया है. कुछ पहली बार आप में रूबरू हो रहे हैं, कुछ कहना चाहिए?
मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बच्चन साहब का, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है उनके साथ काम करने का, और बहुत मज़ा आ रहा है। आज आपको अवार्ड मिलने वाला है यहाँ पे। जी जी। दूर रहते हैं ज़्यादातर, आज आ गए। हाँ, फिल्मी अवार्ड से दूर रहता हूँ मैं। ये अवार्ड चल जाएंगे। मुझे खुशी होती है जब मेरे काम लोगों को पसंद आता है। आमिर, स्टाइलिश एक्टर किसे मानते हैं आप इंडस्ट्री में? कौन है जो बहुत ही अपने आप को? सारे स्टाइलिश हैं मुझे लगता है। अक्षय कुमार, सलमान, शाहरुख, रणवीर, ये सब बहुत ही स्टाइलिश लोग हैं। दंगल अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। कुछ अपनी दंगल अब दुनिया में अलग अलग जगह भी रिलीज़ हो रही है, और हर जगह उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हमें हमेशा खुशी होती है जब भी हम सुनते हैं इसके बारे में। एक जाने से पहले इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन है। मेरा भी एक सवाल है आमिर आपसे। हाँ। आमिर, इन दिनों हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाल ही में अगर आपने देखा होगा। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो आप मानते हैं कि इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से लंबे टाइम से हैं? देखिए, हर जगह है, दुनिया में हर जगह है ये नेपोटिज्म। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि जो आदमी काम जानता है, जो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, जो हमारी फिल्मों में हम लोगों के साथ काम करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर मैं कास्टिंग करता हूँ, तो लोग जो काम जानते हैं, चाहे वो एक्टर हों, टेक्नीशियंस हों, उन्हीं को हम चुनते हैं, उन्हीं के साथ हम काम करना चाहते हैं। फिर चाहे वो मेरे रिश्ते में हो या ना हो, उससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आमिर, नाराज चल रहे हैं मीडिया से कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर कहाँ से? मेरी ये जुर्रत। मीडिया से नाराज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार में है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा कि मतलब वो फोटो आपकी लीक हो गई तो आप? नहीं, वो तो होते रहता है, हमारी हर फिल्म में कुछ ना कुछ फोटो तो लीक होती है। मैं नाराज़ नहीं हूँ। बच्चन साहब का 75वां जन्मदिन जी 11 अक्टूबर को। जी हाँ, जी हाँ। आपने काम कर रहे हैं, कुछ उनके साथ याद, घर पे भी आप दिवाली वगैरह पे जाते हैं? बच्चन साहब के साथ तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब से मैं फ़ैन था उनका, उनकी फिल्में देखता था, और जब से मैं उनके साथ पहली दफ़ा मिला, और हर दफ़ा वो इतनी इज़्ज़त से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल इंसान है वो, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 75वां जन्मदिन, बधाई देना चाहेंगे? आप दीजिए। मैं तो उनको खुद बधाई दूंगा। ज़रूर ज़रूर। अमित जी को मेरी तरफ से 75th ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, एंड यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव learned so much from you. You have given us so much joy, and may you continue to do that, and continue to rise and inspire us. Thank you. Thank you. लाइट ही बंद हो गया। लाइट ही बंद हो गया। इरफान सर इस तरफ भी सर। राइट में सर। सर इरफान सर इस तरफ सर। अरे हटा। थके नहीं। अरे इनको पिक्चर लेना, एक रुक जाओ। आप हमारे लिए रुकेंगे ना? क्या बात है, क्या फिल्टर लगाया, लव साइड डाल दिया। ग्रेट। अरे यार, ये भाई इसको, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं इसकी इंटेलिजेंस से कोप नहीं कर पा रहा। मैं समझ नहीं पाऊंगा इनकी बात में। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। सर, आपके सामने हॉलीवुड नहीं दिख पा रहा, आप यहाँ पे बात। मैं ऐसी गलती से आ गया इधर भाई। बोलिए। आदाब आदाब आदाब। आपका इंतजार था, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आप। खूबसूरत? चलो शुक्रिया। कुछ अपना ड्रेस के बारे में बताएं सर। आजकल आपको हर डिजाइनर मेरा ड्रेस डिज़ाइनर इधर है नहीं, वो बोलता है यार, वो मुझे जो पहनाते हैं उसमें कभी कुछ मैं बोलता हूँ कि हाँ ये पहनाओ, ये मत पहनाओ। ज़्यादातर वही डिसाइड करते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें ही पहन लेता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन पहन लेता हूँ, क्योंकि अगर उसमें पसीना नहीं आ रहा, उसमें वेदर ठीक है, उसमें आप ठीक ही लग रहे हो, और कई बार आपको खुद ठीक नहीं लगते लेकिन लोगों को ठीक लगते हो तो आप पहन लेते हो। शो बिजनेस है। आप तो इतना ही देख रहे हो ना, आपको क्या पता क्या लग रहा है इनसे। नीचे मैंने लुंगी पहन रखी है, आपको क्या पता। अटायर के बारे में ये शांतनु और निखिल का ये वो
वो है डिज़ाइन है और बहुत बढ़िया है और इसमें